हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल्यूशन। दोस्तों, सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डेली मेंस आंसर राइटिंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आज डे 10 है और आज हम इंडियन सोसाइटी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, डज अर्बनाइजेशन लीड टू दी मोर सेग्रीगेशन एंड और मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन द इंडियन मेट्रोपोलिस। जो इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जो इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, ठीक है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, करेक्ट, इस तरीके के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, इन सिटीज़ में अर्बनाइजेशन जो हुआ है, बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन does that lead to the more segregation of the poor people and marginalization? This is the question. मतलब बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन की प्रोसेस हुई है इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, क्या उसके वजह से पुअर पीपल जो है उनका मार्जिनलाइजेशन हुआ है, सेग्रीगेशन हुआ है, क्या हुआ है? This is what we have to discuss about. Okay, now how does this urbanization leads to the segregation and marginalization? first of all किस तरीके से urbanization जो है that leads to the segregation and marginalization? Fine. First is spatial segregation, very important point, spatial segregation. Urbanization क्या करता है? Urbanization actually encourages the land commodification in the urban areas. You can see the prices of the land, they rise so very fast, correct? So land becomes a very important commodity in the process of urbanization, because land is scarce in the urban areas, so its prices rise very rapidly. So land actually basically urbanization actually encourages the land commodification, and that's why इट पुश लो इनकम पॉपुलेशन, जो लो इनकम पॉपुलेशन होती है उनको ये लैंड कमोडिफिकेशन वाली जो प्रोसेस है ये पुश करती है पेरिफेरियल एरियाज़ में। मतलब कि बिकॉज सिटीज़ का जितना कोर इलाका होगा, उस कोर इलाके में जो लैंड प्राइसेस होंगे, लैंड प्राइसेस वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो पुअर पीपल होते हैं दे आर पुश्ड टूवर्ड्स दी पेरिफेरियल एरियाज़। मतलब जो सबर्बन एरियाज़ होते हैं या सिटीज़ का जो थोड़ा सा बाहर का जो एरिया होता है, जिससे द कनेक्टिविटी इज़ नॉट सो गुड देयर एंड द लैंड प्राइसेस आर रिलेटिवली लेस। सो इन दैट वे, बिकॉज more the area is concentrated in the city area, the land prices will be higher and higher there, and more the area is far away from the core of the city, the prices will be lower. So in that way, those who can afford this kind of heavy land prices, they are the rich people, so they will concentrate in the core areas of the city, and the poor people who cannot afford this much costly land, they may shift in the peripheral area. So this is how they get segregated. Here the poor people and here the rich people, they will be segregated because of the land commodification, okay. For instance, if we see the slums like Dharavi in Mumbai, okay, that the Dharavi in Mumbai, this is one of the example that how there is a segregation of the poor and rich people based on the land commodification. Second is informal settlements and housing exclusion. Because of the rapid urbanization actually fails to accommodate the housing needs of the urban poor, forcing them to informal settlements. For example, see, because of the rapid urbanization, there are so many people coming into the urban areas, and that leads to the housing crisis, because the houses are limited and the people living in the cities are more, and because of that the urban poor, their needs of housing is actually, that increases, and that actually force them into informal settlements. Because when the housing crisis comes in any urban area, when there is a housing crisis, the prices go up, it becomes very costly to afford a home or a house in the cities, and that leads to the informal settlement like slums. According to census 2011,
Around 17% of the urban households in India live in slums. And slums, we know slums are basically, they are very poorly facilitated areas where there are lack of facilities, including inadequate access to water, sanitation, and electricity problems. So that actually reflect a systemic exclusion from the urban planning. Systemic exclusion from the urban planning. This is very important. A systemic exclusion from the urban planning. Okay. Now there is economic marginalization also, because urbanization creates a polarized job market. In the urbanization you can see, urbanization में क्या होता है, एक polarized job market होता है. polarized job market का मतलब क्या होता है, पुअर पीपल आर कन्फाइंड टू इनफॉर्मल जॉब्स, क्योंकि जो फॉर्मल जॉब्स होती है, फॉर्मल जॉब्स के लिए देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्स एंड skills are required. So for example, in a city like Bangalore or in a city like Pune, when there are good jobs which are available in the field of IT, right? So in the field of IT you need skill. So that actually polarize the job market, because not everyone is equally equipped with the skills required to that particular market, to that particular job requirement. So in that scenario, poor people with having low skills or no skills, they remain confined to the informal jobs, and informal jobs are because they are low paying jobs and they are also insecure jobs. For example, the domestic workers, street vendors, and daily labor constitutes a significant portion of the urban informal employment. Next is displacement and gentrification. See, urban development projects, they often displace poor communities, because there is a development, because of there are development projects. Due to these development projects, there is a displacement, and displacement is mainly of the poor communities in the name of infrastructure development. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे जो गरीब लोग हैं उनको डिस्प्लेस किया जाता है उनके ओरिजिनल लोकेशन से, सो दैट वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाए. फॉर एग्जांपल, साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट इन अहमदाबाद दैट डिस्प्लेस्ड थाउजेंड्स ऑफ इनफॉर्मल सेटलर्स. जो इनफॉर्मल सेटलर जो झुग्गियों में या छोटे से झोपड़ियों में रहते हैं, उन्हें डिस्प्लेस किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया को डेवलपमेंट और ब्यूटिफाई करने के लिए. इनएडिक्वेट एक्सेस, तो बिकॉज कि उन्हें डिस्प्लेस किया गया, तो द एरिया विच गॉट डेवलप्ड, नाउ द प्राइसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया गॉट इंक्रीज्ड, एंड रिच पीपल विल ओनली बी एबल टू अफोर्ड दैट द प्लेसेस, द हाउसेज देयर, एंड दिस डिस्प्लेस्ड पीपल विल गेट प्रोबेबली कंपेंसेशन बाय हाउसिंग प्रोजेक्ट विच इज़ फार अवे फ्रॉम द सिटी और मेन एरिया. Inadequate access to urban services. Urbanization exacerbates the inequalities in the access to education, healthcare, and transportation. If you see in the urban areas, let's take an example of the schools. There are some CBSE, ICSE board schools which are private schools with having a very good quality education and very hi-fi infrastructure. In such a schools and colleges, the fees is so high that definitely the poor people cannot afford. So they are forced to send their children into the schools which having less fees and not so much of good facilities probably. So poor neighborhoods are often underserved with the government schools and public health facilities. उन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना पड़ता है जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज शायद नहीं अवेलेबल होती. तो दैट एक्चुअली इससे क्या होता है कि इनइक्वालिटी एग्जैबरेट होती है, इनइक्वालिटी जो है वो एग्जैबरेट होती है. सोशल मार्जिनलाइजेशन, सी माइग्रेंट्स, दलित्स, मुस्लिम्स एंड अदर मार्जिनलाइज ग्रुप्स, दे फेस डिस्क्रिमिनेशन. ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं इन अर्बन हाउसिंग. अर्बन हाउसिंग जो सोसाइटीज़ होती है, अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर. ऑल्सो इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट्स, ओके. अर्बनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस द रिलायंस ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. अर्बनाइजेशन के वजह से, अर्बनाइजेशन इज बेसिकली इज मोर डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी. So because of this too much reliance upon the digital infrastructure, many people who lack, especially poor people
who lack access to technology and also access to internet, and they also lack the digital literacy. So they got excluded, though they got excluded from the opportunities in education, jobs and government schemes because of the digitalization. Also there is environmental marginalization. Now the problem is, what are the factors that exacerbate this segregation and marginalization? ये जो सेग्रीगेशन और जो मार्जिनलाइजेशन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या है? अभी हमने देखा, वी हैव जस्ट अंडरस्टूड दैट हाउ देयर इज अ मार्जिनलाइजेशन एंड सेग्रीगेशन. नाउ वी विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर माइग्रेशन एंड segregation, marginalization and segregation. Okay, policy bias towards elites. Urban policies, they prioritize commercial development. See, urban policies mostly prioritize commercial development because obviously the land prices is the one of the important factor, and the prices are so high that commercial development projects are only viable. So when commercial development projects are there, also affluent housing मतलब 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4.5 BHK, such kind of flats and infrastructural housing development projects are there, which actually provides so many amenities including schools. Within the society there are so many other amenities including swimming pool, including so many sports facilities. So these are very much costly. These projects have so much of cost, so that is definitely not affordable housing for poor people. Correct. For example, smart city projects often neglect the needs of the slum dwellers and informal workers. Second, so this is a policy bias towards elites. Also weak urban governance, fragmented governance structures and poor coordination among the municipal bodies. And different institutions, there is a poor coordination that leads to the ineffective delivery of services to the marginalized groups. जो marginalized groups को जो services मिलनी है, जैसे कि safe drinking water and sanitation related facilities, all these things are poorly delivered. Why? Because there is a poor coordination among the different agencies which are involved. Also there is a lack of affordable housing policies, because while there are schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana which aim to provide housing for all, but there is a implementation gaps, and also eligibility criteria often exclude the poorest people, because there are so many criteria which may exclude the poor people. Also infrastructure driven urbanization is one of the important factor. See, large scale infrastructure projects, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इक्विटी को बेसिकली जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर सोशल इक्विटी. सोशल इक्विटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को दी जाती है large scale infrastructure projects में, because a lot of money is involved, and such kind of projects are either they are mostly private or they are PPP model based. So in such a scenario, because the privates are involved, the economic growth and profit is mainly the main concern and main priority over the social equity and justice. Fine. But then what are the counter arguments? Urbanization also provides better employment opportunities that we cannot deny. It also enables upward mobility for some poor families. For example, if there is someone who is living in the poor family, but if he get good education, and if he study well, work hard, he have the chance to move in upward in the social structure or economic structure. Okay, so that opportunities are somehow provided in the urban areas. Also social integration. Urban centers, they offer platforms for marginalized groups to assert their identity. Policy intervention schemes like National Urban Livelihood Mission. There are schemes like National Urban Livelihood Mission aim to empower the urban poor through skill development and self employment initiative. जो National Urban Livelihood Mission initiative है,
ये इसका एम क्या है, जो अर्बन में जो पुअर लोग हैं उन्हें स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना और उन्हें एम्प्लॉयमेंट जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स है उसमें उन्हें हेल्प करना. नाउ व्हाट आर द सजेशंस? सी, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आवर हाउसिंग जो है, आवर urban planning, there must not be any kind of segregation, at least at the policy level. So we have to make sure that at least at the policy level, at least at the planning level, we must ensure, government must ensure that there is no exclusion or marginalization or segregation, and for that we need inclusive urban planning. So for that, what we have to do, we have to develop affordable housing projects. Okay, integrated within the city centers, so that will help us prevent the special segregation. मतलब ये गरीबों का इलाका, ये अमीरों का इलाका, इस तरीके का जो स्पेशल सेग्रीगेशन है वो नहीं होगा अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो सिटी के अंदर ही इंटीग्रेट करेंगे. सेकेंडली, वी नीड टू स्ट्रेंथन अर्बन गवर्नेंस. हमें जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो इंश्योर करना चाहिए कि वो स्मूथ हो, सो दैट दी सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू दी अर्बन पुअर in a very effective manner. Also, we have to ensure that there is a affordable public transport. We need to expand the public transit so that there is a connectivity is improved, especially for the marginalized communities. That is also actually reduce the special exclusion. The special exclusion है, for example, if there are good connectivity and that too is affordable, so people even far from the core of the city area, they can travel very easily, so that will actually help reduce the spatial exclusion. Skill development programs are also helpful. The initiative to upskills informal workers can help them access formal jobs, which will improve their economic inclusion, because that may provide them some kind of security and some kind of better jobs and well-paying jobs. Also, participatory urban policies are important. See, while making policies regarding the urban planning and urban related issues, the marginalized groups must be taken into the discussion, so that they also put their inputs, they also provide their inputs, and a policy can be inclusive and more effective even for the marginalized people. And definitely there is a need to strengthen the social protection. So we need to expand the schemes like ration distribution, healthcare facilities, and subsidized education in the urban areas. That can actually reduce the economic vulnerability. So government schools and government hospitals in the urban areas, they must provide quality education and health respectively, so that there is no difference in the quality of education, also quality of the healthcare facilities. So this is how we can actually deal with the marginalization and segregation of the poor people or marginalized people in the urban areas. Moving to the next question, what is cryptocurrency? And how does it affect the global security? This is the first thing which we have to write in the introduction itself. We can write this in introduction itself, then we can in the first paragraph somehow explain what does it mean, how does it operate, how does it work. Then we will write about how does it affect the global security in the subsequent paragraph, how does it affect the global security. And then we will also talk about how it is affecting the Indian society. See, cryptocurrency is basically a decentralized digital currency. ये एक decentralized, it's not centralized, it's a decentralized, ये एक decentralized currency है, decentralized digital currency है. First, it's a digital currency, it's not a physical currency like we have note of 100 rupees, 500 rupees. It's not a physical currency, it's a digital currency. That is first thing. It is decentralized. Centralized means when the currency is centralized, it means it is regulated
from any particular central headquarter. For example, in India, our rupee is a currency which is centralized, and RBI is at the center, which actually regulates the supply of money, which actually regulates the supply of money. So that is centralized because there is a central control. Okay, but cryptocurrency does not have such kind of central control, and it is based on the blockchain technology. There is a technology known as the blockchain technology. It is based on this blockchain technology, so that actually ensures secure, transparent, and immutable transactions without the need for intermediaries like banks. They don't need banks. There is no need of any kind of intermediaries because it is decentralized. It has the secure, transparent, and immutable transactions. There are some examples like Bitcoin, Ethereum. These are the cryptocurrencies. These are the examples of cryptocurrencies. Now, what is cryptocurrency? We have already studied, we have already understood. What are the advantages? Decentralization, that ensures no single entity controls the currency. Like there is no bank like RBI which controls the entire currency of the economy. So in that case, in case of the this particular cryptocurrency, decentralization is there. That's why there is no single entity which can control the currency. Secondly, borderless transactions are facilitated, so that actually help to facilitate global trade and also reduce the remittance costs. So impact of cryptocurrency on the global security पर इसके क्या impact है? First is, see, cryptocurrencies pseudonymous nature. So cryptocurrency का जो nature है वो pseudonymous है. Pseudonymous जैसे pseudonymous nature है. It means that makes it vulnerable to misuse by the terrorist organization. Terrorist organization इसका misuse कर सकते हैं फंड्स जो है वो anonymously ट्रांसफ़र करके, क्योंकि ये pseudonymous है. करेक्ट. सेकेंडली, क्रिप्टो करेंसीज जो है ऑफन डिमांड एज अ रैंसम पेमेंट्स इन साइबर अटैक्स ड्यू टू देयर एनोनिमिटी. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पर एनोनिमिटी रहती है. एनोनिमिटी, दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस. Also, some countries like North Korea, they have allegedly used cryptocurrency to bypass international sanctions, फंडिंग देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स. जो नॉर्थ कोरिया है उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड करने के लिए उन्होंने बेसिकली जो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं इसे बाईपास करने के लिए, इससे बचने के लिए, बिकॉज नॉर्थ कोरिया अगर जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स वो इम्प्लीमेंट करते हैं और कहीं से फंडिंग लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो ले नहीं पाएंगे फंडिंग, क्योंकि करेंसी जो है वो जो डॉलर या किसी भी और करेंसी में उन्हें सप्लाई जो है वो नहीं मिलेगा. तो ऐसे सिनेरियो में क्रिप्टो करेंसी का वो यूज़ करके इस प्रोसेस को जो है एंड इंटरनेशनल सैंक्शंस को वो बेसिकली बाईपास कर सकते हैं. Unregulated cryptocurrencies are not regulated, they are unregulated, and because they are unregulated they can destabilize the इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं अगर हम अपने ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स को इससे रिप्लेस कर दें. इफ़ वी रिप्लेस our traditional financial systems and currencies by cryptocurrencies, they can destabilize economy because they are not regulated. In fact, it is difficult to regulate basically because of its decentralized nature. उसके decentralized nature की वजह से इसे रेगुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है. अब इसके इंडियन सोसाइटी पर इम्पैक्ट क्या है? इंडियन सोसाइटी पर इसके इम्पैक्ट क्या है? फर्स्ट, among the Indian youth, it has been basically because the Indian youth are mostly tech savvy, so they actually like this particular concept of cryptocurrency and they are adapting it very fast. Correct. Also, but there are chances of misuse and scams because many individuals, they lack awareness about cryptocurrency in a very proper manner. ऑल्सो बिकॉज देर इज़ अ डिजिटल डिवाइड. फॉर एग्जाम्पल, अर्बन पॉपुलेशन में कुछ लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग इट, बट रूरल कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक्सक्लूडेड रह रही है बिकॉज दे हैव लो डिजिटल लिटरेसी. उनकी डिजिटल लिटरेसी जो है वो कम है, एंड दिस एक्चुअली इज़ वाइडनिंग द इनइक्वालिटी. समाज में जो इनइक्वालिटी है
वो बढ़ रही है। लीगल और रेगुलेटरी कंसर्न्स की बात करें तो देखो, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेगुलेशन देर इज़ अ प्रॉब्लम दैट क्रिएट सम अनसर्टनटी ऑल्सो, बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज फैसिलिटेट अनरिपोर्टेड ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि वो अनोनिमस हो सकते हैं और वो मल्टीपल लेवल्स पर ऑपरेट होते हैं, तो दे मे गो अनरिपोर्टेड, सो दैट काइंड ऑफ अनरिपोर्टेड ट्रांजेक्शन can lead to revenue loss for the government because of the tax evasion. It's easy to evade the tax with the use of cryptocurrency. Also, unregulated platforms and Ponzi schemes exploit the unsuspecting investors को exploit कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, देखो backbone of the cryptocurrency is a blockchain technology and it has a potential application in sectors like banking, supply chain management and governance. supply chain management में बहुत ज़्यादा यूज़ है, इवन बैंकिंग में भी, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये बेस्ड है डिसेंट्रलाइज्ड नेचर पे एंड दैट एक्चुअली इनहेंस द एफिशिएंसी. So it can, such kind of technology if implemented in other sectors like banking, supply chain and governance, that may foster the positive social impact. Now what are the government responses in India, especially related to the cryptocurrencies? Government brought some regulatory measures like Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021, which actually seeks to ban private cryptocurrencies. It banned private cryptocurrencies while it promote a central bank digital currency. सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी को ये प्रमोट करके प्राइवेट जो क्रिप्टो करेंसी है उसे बैन करता है। ये बिल नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021. ऑल्सो RBI अपोजेस ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज. टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो 2022 में गवर्नमेंट ने 30% टैक्स क्रिप्टो गेन्स पर इम्प्लीमेंट किया है एंड 1% TDS ऑन द ट्रांजेक्शन्स to regulate trading and discourage the speculations related to cryptocurrency. Government have also taken awareness campaigns efforts to make people aware about the risks of the cryptocurrencies. Also, there are collaborations on the global platforms. India participates in G20 discussion on creating unified global framework for regulating cryptocurrencies to address the cross-border challenges. So this is how a balanced approach which promotes blockchain innovation, implementing robust regulations and creating awareness can harness the benefits while mitigating the threats related to the cryptocurrencies. Okay. Next question, very interesting question. Critically examine. We have to critically examine. This is the directive of the question. We have to critically examine. What we have to critically examine? One, whether the growing population is a cause of poverty or poverty is the cause of population increase in India. So whether the growing population is resulting into poverty, क्या population बढ़ने के वजह से गरीबी बढ़ रही है या फिर गरीबी के वजह से population बढ़ रही है. इस साइकिल को हमें बेसिकली एग्जामिन करना है कि क्या ये साइकिल सही है या ये साइकिल सही है या दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और रिलेटेड है. सो बेसिकली दोनों के बीच जो रिलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉवर्टी के बीच जो रिलेशन है, ये काफ़ी इंट्रिकेट है. क्यों? क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे को कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस की तरह एक्ट करते हैं. वन इज कॉज, सेकंड इज द कॉन्सिक्वेंसेस. इफ सेकंड इज द कॉज, first one is the consequences. So both are cause and consequences for each other. So first we will see कि how growing population is the cause of poverty. Population growth की वजह से किस तरीके से poverty बढ़ती है. Okay, when there is a population growth, there is a pressure on the resources. There is a pressure on the resources because resources are limited. For example, land, water and food, they are limited. Correct. Secondly, because of the population growth, it overburdens the education, healthcare and housing systems. For example, there are schools, there are hospitals, there are housings, there are houses,
but because of the population increase, that actually overburdens the system of education, the system of healthcare, and system of housing. So that is one of the reason that there is a poverty because of the population increase. Also, when population growth increases, population growth जब increase हो जाती है, so there is a too much of labor supply, there is a too much of labor supply, and but that fails to match the employment opportunities. There is a too much of labor supply, but that too much of labor supply not necessarily employable, and also first they are not employable enough because of the lack of skill and proper education, also because of the not so proper health, and apart of that there are not enough employment opportunities which keep pace with the growing labor supply, and that's where there is an increase in the competition among the people for the jobs, and that leads to low wages and persistent poverty, because एक जॉब के लिए मल्टीपल पीपल आर अवेलेबल एंड विलिंग टू डू बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट्स वाई दे हैव टू एक्सेप्ट द जॉब इन दी with low wages, and also and that leads to the persistent poverty. Migration, because of the population growth, they migrate towards the urban areas for the better employment opportunities and better life in the city area, but then they eventually create slums. As example is Mumbai's Dharavi. So such kind of overcrowding actually limit the access to sanitation. ओवरक्राउडिंग की वजह से सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है और एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिस वजह से एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन, पीपल अगेन fall in a trap of the poverty. Now the second aspect is poverty as a cause of population growth. First we have seen how population growth has resulted into the poverty. Now we will see how poverty has led to the population growth. See, first is poverty restricts the access to education. Poverty के वजह से इंसान को सही एजुकेशन नहीं मिल पाता है, खास करके वुमेंस को, और जिसके वजह से इलिटरेसी बढ़ जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द फैमिली प्लानिंग के बारे में सही से अवेयरनेस नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन और रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एजुकेशन. सो दैट रिजल्ट्स इन हायर फर्टिलिटी रेट्स जो है वो बढ़ जाते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर हम TFR की बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें, तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स है जैसे कि बिहार, वहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू केरला, जहाँ पर 1.8 ही है और अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 2 है. रिप्लेसमेंट लेवल जो होती है 2.1, उससे भी कम का फर्टिलिटी रेट है केरला में. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है, एजुकेशन को लेके एक्सेस है. तो एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ देयर व्हेन देयर इज़ नो पॉवर्टी. सेकेंडली, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स व्हेन देयर इज़ अ पुअर हेल्थ केयर एक्सेस. जब हेल्थ केयर एक्सेस सही नहीं होता है, हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो इनफ नहीं होता है, तो इसके वजह से हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स हो जाते हैं, एंड दैट प्रॉम्प्ट्स फैमिलीज टू हैव मोर चिल्ड्रन बिकॉज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी हाई. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है काफ़ी हाई होने की वजह से, बिकॉज दे नो दैट देर आर मोर चांसेस दैट the child who born may die, and because of the infant mortality rates are very high, so they go for more children, so that if a child die, still they have children survived for their family. Correct. Economic dependence on large families. This is in poverty stricken rural areas, ऐसे रूरल एरियाज में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है, तो जो चिल्ड्रंस हैं दे ऑफन सीन एज अ इकोनॉमिक असेट. जो फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा गरीब होती है तो वो बच्चों को इकोनॉमिक असेट की तरह देखती हैं, सो दैट वो फैमिली में कंट्रीब्यूट करे थ्रू इनकम. वो अपना काम पर जाए, लेबर पर जाए और इनकम कमाए और घर में कंट्रीब्यूट करे, फैमिली में कंट्रीब्यूट करे. इसलिए भी ज़्यादा दे गो फॉर मोर चिल्ड्रंस बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिपेंडेंस on the large families. Also,
लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स एंड सोशल टैबूज लिमिट द एक्सेस टू। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स के वजह से और सोशल टैबू के वजह से जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स को जो एक्सेस है, और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जो होती है, फैमिली प्लानिंग रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स या फिर सर्विसेज होती है, उन्हें एक्सेस नहीं मिल पाता है, एंड दैट एक्चुअली लीड्स टू अगेन growth of the population. Also, there are some cultural and social factors. For example, see, poverty amplifies cultural norms that favor large families for social and economic reasons, as we have already seen. Also, patriarchal societies में, खास करके रूरल इंडिया में, they go for more and more children so that they ensure there is a male child. Okay. Now, what are the policy interventions needed to break this vicious cycle of poverty and population? Education and awareness. Expanding the educational access, especially for women, is crucial. ओके, फॉर एग्जांपल केरला में फीमेल लिटरेसी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर लो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो है, और जिसकी वजह से लो फर्टिलिटी रेट होने की वजह से पॉपुलेशन कम की वजह से पॉवर्टी भी कम हो गई है। हेल्थ केयर और कॉन्ट्रासेप्टिव्स को एक्सेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 दैट फोकसेस अपॉन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. Okay, but then growth remains uneven. That is one of the concerning thing which we have to see. Also, employment generation, we need to create more jobs in the rural areas so that there is no migration and there is no overcrowding in the urban areas, and there is no mismanagement in the urban areas leading to the poverty and population increase. So we need to go for schemes like Manrega, which ensures more jobs. Social security systems, providing robust old age pensions, child health care schemes that can reduce the dependency on larger families for economic security, which will address both poverty and high fertility rates. Also, urban planning and infrastructure, better urban planning and better resource management that can elevate the impact of population growth on cities, reducing the poverty cycles. So basically, breaking this cycle requires multi-pronged approach which focuses on education, healthcare, economic growth and gender empowerment. So sustainable development goals can only be achieved by addressing these interrelated challenges cohesively. So thank you very much for this discussion. See you in the next session.